can see the beautiful procession headed by a beautiful band is arriving. I request everyone to rise in their seats. I request everyone in the audience, please rise in your seats as we welcome the Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh. I request everyone in the audience to please rise in their seats. I request respected teachers, all the students to please rise in their seats as we are receiving the Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patelji, as the chief guest of this session, along with Shri Prashant Girbaneji, Shri Asim Patilji, and Shri Deepak Karandikarji. I request everyone to give a big round of applause, my friends, as we welcome the Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patelji, as the chief guest of this session. A big round of applause. I request everyone to maintain the dignity and decorum. A big round of applause. We have the presence of Shri Deepak Karandikarji, Shri Asim Patilji, Shri Prashant Girbaneji. All are requested to join hands for ringing the bell of democracy, for giving the clarion call to all the public representatives and legislators for strengthening the democracy. I request all the dignitaries along with Executive President Shri Rahul V. Karad, Founder President Revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir. I request all to join hands for ringing the bell of democracy. It's an important clarion call to all the public representatives and legislators for strengthening the democracy. A very important mission embarked upon by MIT Group of Institutions for last more than 4 decades. A big round of applause, my friends, as we join this momentous occasion to our applaud. Thank you very much. I now request all the dignitaries to kindly lit the traditional lamp. The lighting of lamp is an important tradition of our country and holds a very important and spiritual significance in our tradition. It symbolizes the removal of darkness and ignorance and illumination of knowledge and wisdom. It is believed to bring good luck, prosperity, and peace. A big round of applause as through this lighting of lamp, this formal function is now formally inaugurated. Thank you very much. I request all the dignitaries to kindly make the way. As per the protocol, we are now going to begin this ceremony with national song Vande Mataram. I request everyone to rise in their seats. I now request, may I request for absolute silence in the auditorium, please?
Thank you very much. I request my technical team to kindly relay national song Vande Mataram. Thank you. I request everyone to please fold their hands, close their eyes as we prepare for World Peace Prayer. I'm sure all the students are aware of our tradition. I request everyone to please close your eyes. I would like to request everyone to please close their eyes, fold their hands, as this is our tradition for last 4 decades that we begin with World Peace Prayer, which is a prayer for the betterment for entire mankind and not just any religion or section of society. Let us have the moment of peace. I request my technical team to kindly relay the World Peace Prayer. प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवापूति गणेशु सकलार्थ मतो प्रकाशु मणिवृत्तिदासु अवधारि गोदि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. My friends, in today's fast-paced and highly competitive business world, it is crucial for management students to be equipped with the latest knowledge skills. A state-of-the-art building provides an ideal learning environment and leads students to develop necessary competencies to become future business leaders. The physical structure of the building can greatly impact the learning experience of students with modern and cutting-edge facilities. Students are able to work on practical projects, participate in interactive discussions and simulations, and access
the latest technology. These opportunities enhance their overall understanding of the management concepts and theories and allow them to apply their knowledge in real-world situations. It is indeed our honor and privilege to have the Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patelji, as the chief guest on this very, very important occasion of inauguration of newly constructed grand building of WPU School of Business, CHANAKYA. I would like to request all of you to give a big round of applause once again for all the dignitaries present here today for this important occasion. And now, I would like to request the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. R.M. Chitnis, to kindly propose welcome address. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of our founder president and UNESCO chair for Human Rights, Democracy and Peace and Tolerance, Honorable Revered Dr. Vishwanath Karad sir, our executive president, Honorable Shri Rahul Vishwanath Karad sir, on behalf of our trustee members of MIRIS MIT group of institutions, on behalf of faculty, staff, and 20,000+ students of MIT World Peace University, it gives me immense pleasure to extend a warm and cordial welcome to our chief guest and Honorable Governor of Uttar Pradesh, Madam Anandiben Patelji. Also, we welcome guest of honor Shri Deepak Karandikarji, President of Maratha Chamber of Commerce and Industries and Agriculture, Shri Prashant Girbane, Director General of MCCI, and Asim Patil, MD and CEO of iTech Software and Systems, and our alumni in this auspicious ceremony of laying the cornerstone of building titled Chanakya. Madam, we are honored to have you here in this pious gathering for the inauguration of our new magnificent building Chanakya, which houses various departments like School of Business and Leadership, Center for Industry Academic Partnerships, and many meeting rooms, classrooms, conference hall, and so on, which you have just witnessed after the inauguration. Madam, you would be happy to note that the sprawling campus of MIT World Peace University, we have named every building in the name of distinguished personalities of our great nation, Bharat. These personalities comprises of saints, sages, scientists, philosophers, and also sacred rivers of India. Dear all, we are truly honored to have Madam Anandiben ji as the chief guest of this ceremony. The life of Anandiben ji is really, really inspiring and commendable. As a student, she won Veer Bala Award for outstanding achievement in athletics. She completed her graduation and became a school teacher of complicated subject like mathematics. Later on, she became the head of school, principal of the school, and ran the school very successfully for long innings. Further, she went to become Chief Minister of Gujarat and completed a very successful tenure, as we all have witnessed. Being Honorable Governor, she is the de facto chancellor of all the state universities in the state. It is really astonishing to note that she takes personal interest in functioning of all the universities despite her busy schedule to increase the quality of education. As academician, we all know that education forms the foundation of our nation building. Here I want to share one anecdote with Madam. Prime Minister Modi ji in his constituency recently conducted Vice Chancellor's conference. Madam Anandiben was in the 10th row as a participant, taking all the notes for all 3 days, all lectures. Very, very rare in our country, as you know, someone who is honorable governor attending all lecture, not in first, second, third row, in the 10th row. Very, very outstanding. And we are happy to inform you, Madam, that vision, mission, and founding principles of our MIT World Peace University are to impart value-based and holistic education for life transformation of our students to make them responsible as not only national, but the global citizens.
Madam, we know about you on the lines of toiling work of yours in the development of Anganwadis, rural education, and university education. We at MIT World Peace University have undertaken various co-curricular initiatives conceptualized by our visionary Executive President Rahul Karad sir, such as Rural Immersion Program, Bharatiya Chhatra Sansad, which sees substantial participation of girl students, leaders, and National Women's Parliament in honor and respect of Nari Shakti Bharat. Madam, we know that you take interest in rural development, Anganwadis, university, and Nari Shakti. We all are following the similar kind of footsteps under able leadership of young and dynamic Rahul Vishwanath Karad sir. Going forward, recently we organized a very unique workshop for the Vice Chancellors for strategizing transformation of higher education in India. The workshop was conducted in association with Higher Education Foundation of USA, and it was attended by 100 Vice Chancellors, Chancellors, President, Provost, and Indian origin, those who are in the universities in the US. Madam, you are aware that Rahul Karadji is arranging for best practices exchange between India and US. And I know, which I can share from this gathering, your visit in Pune has also this agenda, and you have 10 Vice Chancellors accompanying you, and they are visiting different universities. We are open for such collaborations with you. Coming to an end, let me share that our motto is Vishwa Shanti Dhruvam Dhruva, which means let's peace prevail in the entire universe. And as our founder president, Dr. Vishwanath Karad sir, believes in the prophetic thoughts of wisdom of Swami Vivekananda ji, that union of science, philosophy, and religion will alone bring peace and harmony in the world, or to entire mankind. Our entire objective and efforts are to bring that Bhavishyavani into reality and make India as a Vishwa Guru in this century. Thank you for coming here. We once again welcome all the guests, and especially Anandipan Patel Madam, in present here for the inauguration of this new building, Chanakya. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. A round of applause for Madam once again. Thank you, sir. Thank you very much. And now, as per the tradition of our country and our institution, I would like to request Revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir and Shri Rahul Karad sir to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chief guest of this session, Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji. Let's give a big round of applause, my friends, as we welcome the Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh. It is really our good fortune to have you here today, madam. Thank you very much for your presence. It is indeed our honor. A big round of applause, my friends. Thank you very much. I now request sir to kindly felicitate and welcome the President of MCCIA and the Director of Praditi Press Parts Private Limited, Shri Deepak Karandikar ji. A big round of applause, my friends, as we welcome Shri Deepak Karandikar ji, the guest of honor of this session. Thank you, sir. I now request sir to kindly felicitate and welcome the Director General of MCCIA and Secretary General of Pune International Center, Shri Prashant Girbane ji. A big round of applause as we welcome Shri Prashant Girbane, Director General of MCCIA. Thank you very much. I now request sir to kindly felicitate and welcome the Chief Executive Officer and Managing Director of iTech RFID NFC Technology, Shri Asim Patil ji.
A big round of applause as we welcome Shri Asim Patil ji. A proud alumnus of MIT Group of Institutions. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. And with this, I would now like to invite and request the Managing Trustee of MIRE and Executive President of MIRE and MIT World Peace University and Chief Initiator of MIT School of Business, first School of Bharat for Political Leadership, and founder of many innovative platforms in our country like Bharatiya Chhatra Sansad, National Teachers Congress, National Women's Parliament, Sarpanch Sansad, and National Legislators Conference. Please welcome with a big round of applause, Shri Rahul V. Kara. Thank you, Professor Bapat. Janani Janmabhumisha Swargadapi Gariyasi. Behalf of the bodies of trustees and our beloved founder, all the staff and the students of MIT School of Business, WPU School of Business in particular, let me welcome the chief guest of today's program, Madam Anandiben Patel, the Honorable Governor for Uttar Pradesh, a veteran leader. It is not the first time she's coming here. This is for our institution, this is her third visit here. Madam, from my bottom of heart, I express my gratitude for bestowing that very confidence in this very prestigious institution, MIT Group of Institutions and various other our social initiatives. Thank you so much for your participation. I also wish to welcome Shri Deepak Karandikar Sahab, who is the President of Maratha Chamber of Commerce. Karandikar Sahab, thank you so much for your participation from small and medium-sized companies. I think for the first time, you know, one such very important leader who has come from the grassroots, who happens to be the student of our beloved founder, Dr. Vishwanath Karad sir. Thank you so much for your participation. You are heading one of the prestigious chambers of this city of Pune, the oldest chamber of the, and one of the prestigious chambers at the national level also. So I welcome you, Shri Karandikarji, that from the corporate side, you are representing this very important occasion here for inauguration of this CHANAKYA building of World WPU School of Business. Thank you so much. I also wish to welcome another leading entrepreneur, Mr. Ashim Patil, who is in the year 2000, who passed out from this very institution, my dear students. We all know that in the country, the fast-tag technology, every highways and everywhere in the world, I mean to say worldwide it was quite common, but in India, this particular concept was initiated by Mr. Ashim Patil, who is a mechanical engineering student and a very prestigious alumni today and a senior industry leader. I wish to welcome you also, Ashim ji, for your participation. And we see that in the future also you keep coming to support and guide the student community for their various future initiatives. Thank you so much. I also wish to welcome Prashant Girbane ji, another senior corporate leader who is the Secretary General of Maratha Chamber of Commerce, who is, I must say that he is very much from my area, where we belong to area called Latur, you know, and you are also from that area. So from a very humble background, how you could develop, and today you have definitely from Ahmedabad, you completed your MBA and various other corporate institutions you served. But I think this very chamber today, the vibrancy of Maratha Chamber of Commerce, you have definitely, you know, carrying that very legacy to the different level. Thank you so much, Girbane ji. Our Vice Chancellor, Dr. Chitnis, Pro Vice Chancellor, Professor Tapan Pandaji, who is a senior academic leader in the management domain. I think he is among those 2% researchers in the world in the management education. So thank you, Professor Panda, for inviting all of us rather for this very your business school, the WPU School of Business, and all others. Professor Sharma, the leader of BBA. I can't see him, but who is heading the dean, who is the dean of BBA program. Thank you so much, Professor Sharma. So this is the B school building, the business school building inauguration today by the hands of Honorable Governor Madam. So, and Mr. Praveen Patil, who is helping us for various industry academia collaborations and the internationalization. Thank you, Mr. Patil, for taking efforts for building up this program. Thank you so much. Dr. Chitnis, I think what a great fortune you made a mention just now about the respected Governor Madam, that how and what way about her humility and about her commitment. But my dear students,
I just want to say just one little story of even our beloved founder also and Honorable Governor Madam also, that how that one or two such incidences in life can really change the path and that particular, that turning point, I must say, it takes any human being to the different level. So in case of Madam, if you see little her profile carefully, long back there was incidents at her school days that in Sabarmati river, she jumped just to save one or two girls. I think they fall into the river, and she jumped to save those girls there. And then that became the turning point, that the social activism, the social commitment, social belongingness, this very institution, MIT World Peace University, is always trying to promote through various social initiatives the very vision of our founder, that how do we connect the degree programs with the society. But to go to the closer to the society, I think we have to see the society. And we have to see the society with the wide eyes open, I think. And that was one gesture in life of Honorable Governor Madam, that I think in her profile on the Wikipedia, everywhere it is written that how she, initially she was not inclined towards politics, and she was not even aware that I will get into the public life in this fashion. But that very, her sensitivity, I must say, for the society, I think it really ignited her from within, and that's how further in her political career she became a teacher, and so much she became a chief minister, and various other positions, of course, she decorated. But to become a chief minister, it's not an easy thing, as you all know that in polity what she has done. So madam, thank you so much. आपका यहाँ पे आज आना हुआ, हमें बड़ी प्रसन्नता है. आज ये मैनेजमेंट स्कूल 1987 में निकला, और मुझे दूसरी भी आज प्रसन्नता है कि इस मंच पे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो 1990 में यहाँ पे, मतलब शायद आज कितने सालों बाद, 20 साल के बाद इस तरीके का प्रोग्राम पेंडॉल डाल के इस पर्टिकुलर लॉन में हो रहा है. बिकॉज ये जब संस्था कभी शुरू हुई तो खाली 2 ब्लॉक्स यहाँ पे हुआ करते थे. सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा 83 की बात, और 5-6 साल बाद जब 90 में मैडम चंद्रशेखर जी माननीय प्रधानमंत्री थे, तो एनुअल सोशल गैदरिंग में उनका यहाँ पे आना हुआ. तो मैं 9-10 साल का यहाँ पे था, तब यहाँ पे मुझे याद है, यहाँ पे मैं कहीं बैठा था. तो उसके बाद शायद ये प्रोग्राम इस पर्टिकुलर लॉन में आज ही यहाँ पे हो रहा है. और ये बहुत शानदार बिल्डिंग, जो एक हाईटेक बिल्डिंग आप सब लोगों के लिए MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे बांधी गई, और मैडम के हाथ से आज इसका यहाँ लोकार्पण हुआ. मैं मन से, हृदय से आपका मैडम स्वागत करता हूँ. मैं जैसे उनके जीवन का एक प्रसंग मैंने बोला, उसी तरीके से आदरणीय हमारे फाउंडर सर, इस संस्था के रेवियर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ सर, उनके जीवन में भी, मतलब उनको पता नहीं था कि उनको कलेक्टर बनने की इच्छा थी दोस्तों, और कलेक्टर बनने के लिए उनको पता नहीं था कि कौन सी डिग्री बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. और बिकॉज पिताजी किसान थे, तो पता नहीं था आगे चल के मुझे अगर कलेक्टर बनना है. तो उनके जीवन में सोलापुर में जब वो गए, तो एक प्रोफेसर ने उनके मार्क्स देखे कि, तो उन्होंने बोला मुझे बीकॉम करना है या BA करना है, या आगे मुझे कलेक्टर बनना है. तो ये डिग्री तो, अरे भाई मैथमेटिक्स में और इसमें तो तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं, अगर आपको इतने अच्छे मार्क्स लेके BA बीकॉम करना है तो फायदा नहीं होगा जीवन में. आप इंजीनियरिंग करो. कलेक्टर बनने के लिए इंजीनियरिंग बन के भी आप कलेक्टर बन सकते हैं, BA बीकॉम बन के भी कलेक्टर बन सकते हैं. तो जीवन में ऐसे किस तरीके से एक अर्ज तो उनके मन में थी, और उसके बाद वो इंजीनियर बने, एक अच्छे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स के प्रोफेसर बने, COEP जो पुराना यहाँ का ब्रिटिश ज़माने का जो कॉलेज है. और 81 में उन्होंने आर्टिकल लिखा कि महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस की बहुत ज़रूरत है, और वो आर्टिकल हिस्ट्री बना महाराष्ट्र में. और इसके बाद जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग के कॉलेजेस, मेडिकल के कॉलेजेस महाराष्ट्र में कैसे बने, और पूरे देश में 80s के बाद जो प्राइवेटाइजेशन हायर एजुकेशन में कैसे हुआ, और उसी का ये नतीजा है कि आप सब लोग बच्चे इसका लाभ उठा पा रहे हैं. और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और MIT शिक्षण संस्था समूह के माध्यम से करीबन 1 लाख के ऊपर बच्चे, मैडम गवर्नर, अभी तक पूरे भारत में, विश्व में फैले हुए हैं, और अपनी अपनी जगह के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. तो मुझे बड़ा फ़ख्र फील होता है कि आज असीम जी यहाँ पे इनका आना हुआ, और बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, 1 लाख के लगभग, अमेरिका में करीबन 8,000 के लगभग, यूरोप में करीबन 6,000 के लगभग, भारत में अलग अलग कॉरपोरेट्स में जिस तरीके से स्टूडेंट्स पास आउट होके जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में, कॉरपोरेट ट्रांसफॉर्मेशन में जो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो मैं जब पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे बड़ा फ़ख्र फील होता है. मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ.
मैडम, मैं ये शिक्षण संस्था खाली एजुकेशन, खाली टेक्निकल नॉलेज देना यहाँ तक आदरणीय कराड़ सर ने इसको सीमित नहीं रखा। हमेशा उनकी भावना थी कि विवेकानंद जी का जो विचार कि विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से ही विश्व शांति, यूनिफिकेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों का मेल होना चाहिए। हम सब लोग जानते कि बिन लादेन भी बड़ा इंजीनियर था, क्वालिफाइड था, बट ट्विन टावर डिस्ट्रक्शन कैसे किया, और इस तरीके से बहुत सारे क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग भी जीवन में किस तरीके से दिशा उनकी गलत हो जाती है, इसके कई सारे उदाहरण हमारे आंखों के सामने हैं। और उस चीज़ को हमेशा आंखों के सामने रखते हुए हमारे फाउंडर साहब ने इस संस्था का नाम MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, मतलब ये कोई रिसेंटली ये कोई फैशन के नाते वर्ल्ड पीस शब्द तो काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, एक फैंसी के नाते ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। मैडम, ये भावना हमारे शिक्षकों में, हमारे सभी स्टूडेंट्स में हमारा प्रयास है कि ये भाव हम कैसे उत्पन्न करें, और उस भूमिका से मुझे लगता है कि MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, WPU स्कूल ऑफ बिजनेस आगे चल के भी काम करेगा। मैं तपन पंडा जी आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रोफेसर शर्मा, आपके माध्यम से आप आपके जितने भी हेड ऑफ द स्कूल और बाकी सभी जितने भी शिक्षक हैं, मुझे लगता है कि इतनी शानदार बिल्डिंग होने के बाद, मतलब ब्रिक्स एंड मॉर्टर खाली संस्था नहीं बनाते, ये पिताजी ने हमेशा बोला है, आदरणीय कराड़ सर ने, शिक्षकों से संस्था बनती है। इसलिए मैं बार बार आपका नाम ले रहा हूँ, और आपकी जिम्मेदारी है कि ये बिजनेस स्कूल भारत के अग्रगण्य 20 स्कूल्स में से एक हो सकता है। प्लीज़ टेक द फुल बेनिफिट ऑफ मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज मतलब करंदीकर साहब वहाँ पे उनका समय नहीं मिलेगा, सो ही इज़ हाईली ऑक्यूपाइड पर्सन, बट थैंक यू सो मच करंदीकर जी, आपका यहाँ पे आना हुआ। प्रशांत गिरबाने जी, आपका भी यहाँ पे सपोर्ट आने वाले समय में चाहिए। मैं आशिम जी, आपका भी यहाँ धन्यवाद करता हूँ, और माननीय गवर्नर मैडम को फिर से एक बार वंदन करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much for your words. Thank you very much. And it is indeed my honor and privilege to introduce you to the guest of honor of this session, Shri Prashant Girbane ji, who is the director on board of MCCIA, an Auto Cluster Development and Research Institute, and MCCIA Electronic Cluster Foundation. He is the governing council member of Janavani and member of Council of Management of MVIRDC, World Trade Center. He is also a member of Pune Airport Advisory Committee at Pune International Center, a global think tank based in Pune. Mr. Girbane is a trustee and serves as the Honorary Director and Honorary General Secretary at PIC. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Shri Prashant Girbane ji. थैंक यू। महामहिम राज्यपाल महोदया, इस युग के ऋषितुल्य डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, all the dignitaries on this dais, very dedicated faculty, and my dear very young and bright students of this prestigious institution. Let me start by telling you a tiny story. I studied MBA, and I thought possibly I could relate with some of you students who are studying your management education here. So I come from a tiny, tiny village, population about 10,000-15,000 when I was studying there. Went to a district place, studied there. That took me to Mumbai, did my engineering. That took me to Ahmedabad. So Mahamahimji, it was in Vastrapur. It's in Institute of Management in Vastrapur. And that took me, there was an earthquake in 2001. I thought job I'll get to do someday. I should go and do some volunteering in Kutch. So I went to Kutch to do volunteering. Coincidentally, it so happened that after a few months, I got an opportunity to interact with the new Chief Minister of Gujarat then, who is now Honorable Prime Minister of the country today. Ma'am, it was also an opportunity to interact with Dr. P.K. Mishra, work in the team of Mr. Mukim, some of those officers who served in your team as well. That took me to the United Nations. The next step was to work with one IT organization that took me to 22 different countries. I came back to Pune. Why did I tell you this story? I think there are 3 or 4 lessons that I want to share with young and bright MBA students or BBA students who have gathered here in this pandal. The first, never allow where you come from as a constraint on where you would want to go. Let me reiterate. Never allow
where you come from to be a constraint of where you want to go. If that wasn't the case, why would a young graduate coming from a tiny village in Latur district would build up such an institution where tens of thousands of students are studying, lakhs of students have passed out of this portal, and I'm talking about Professor Karad here. In my office, I keep saying, there is no penalty for clapping anytime you'd want to clap when others speak. Second, isn't it an inspiration to look at a young girl who studied in a tiny village in Mehsana district, who grows to become the chief minister of a state and now governor of another state? Isn't it an inspiration that Honorable Prime Minister of this country comes from a humble background and hence do not allow, that's the first one, where you come from to be a constraint of where you would want to reach. Second, study well, of course, work hard, but all of us tell that, so I'll not elaborate much on that. The third, give what you can to your team, to your organization, to the society. Trust you me, what you get in return is in multiples. Try help those whom you can. Improve your coachability, and that's important for lifelong, not just while you're studying here. The last bit I would want to mention, today it's about inaugurating this campus. Having studied management in another campus, I can tell you for sure, it's not just a building. It allows you to create a very rich set of memories. Those memories would be a precious wealth for you, not just the first job you take, but for your lifeline, for your lifetime. I remember just last month I went to Ahmedabad to my campus. It was 20th year reunion, and it felt wonderful. I'm very confident all of you would come back again once you graduate from these portals and feel good and great about the institution. Let me just conclude by saying a huge congratulations to Professor Karad, Rahulji, the Vice Chancellor, all the faculties of the management school, and let me wish very best to each and every one of you as a student of this prestigious institution. Wishing you the very best. I take an opportunity to conclude. Thank you. Thank you very much, Shri Prashant Girbani-ji. It was indeed our honor and privilege to have your words of wisdom. Thank you very much. And now it is indeed my honor to introduce you to the next guest of honor, Shri Aseem Patil-ji, the Chief Executive Officer and Managing Director of iTech RFID NFC Technology Leader and Social Entrepreneur. He is well known and respected in global RFID and IoT fraternity since the last 2 decades. He is a technocrat and a serial entrepreneur for the last 22 years. He is a founder of several technology companies, and he has hands-on all of them. He is passionate for RFID and NFC related to the birth of iTech. At iTech, he strives to develop and deliver innovative RFID and NFC-based automation and IoT solutions. Under his able leadership, iTech has successfully implemented solutions across the verticals like retail, logistics, manufacturing, and many more. Please put your hands together and welcome with a big round of applause the guest of honor of the session, Shri Aseem Patil-ji. Yeah. Respected Governor Madam, my teacher Karad sir, my dear friend, bench partner, classmate Rahul, Vice Chancellor sir, Karandikar ji, Prashant ji, and the dignitaries on the dais. The teachers, whom many of them I recognize here, very, very senior teachers from MIT who have taught me. One of them is Darade sir sitting here, and my dear students. It is indeed a privilege for me, as an alumni of MIT, to be recognized by my alma mater and to be invited amongst such august gathering for the inauguration of the new MBA building, which is aptly named after Guru Chanakya.
Rahul ji told me that, you know, I should speak with the students as an alumni of MIT about my journey within MIT and after MIT. But let me tell you, 5 minutes are not enough to speak about that. So I would just give you the glimpses, you know. I call myself as a social entrepreneur. You know, in entrepreneurship, you know, you are building technology solutions, you're building products, you're developing new innovations. But whenever you are doing something, you know, or in your career, there has to be a larger cause. And that cause has to have some kind of a social angle to it. So when we developed the FASTag technology in the country, you know, the social angle behind it were the long queues at the toll plaza, the inconvenience which was there in handling the cash, the national waste of fuel, and keeping all these social aspects into the mind, we designed this solution, we developed this solution, and today we see how it is benefiting our country. Every one of you will have a turning point in your life after you get your degree and after you get your education. You know, such turning points were just mentioned in the life of Madam Governor, where she saved the life of 2 drowning girls, and then she was pulled into the social life. Similar turning points had come in the life of Honorable Karad sir. But whenever the bigger cause we are talking about, why MIT is such a successful institution. The reason behind having the success behind MIT is not just imparting quality education, but what Karad sir has successfully achieved is he has created students who are mentally alert, physically fit, and most important, we all are spiritually enlightened. So today, you know, in MIT, whenever you students are reciting the World Peace Prayer, you are reciting the Pasaidan, maybe you will not get the real sense of why this is happening with you, why this institute is trying to sow these seeds in your mind. But my friends, mind well, after a decade or so, when you are out in your professional journey, you will realize the importance of what MIT has imparted in you, and I am a living example of it. I will not take much time here, you know, we have limited time, and I wish you all the students the very best, and I wish MIT the very best, and I wish that all the students sitting here will get the same kind of recognition from their alma mater, from their peers. Thank you very much for having me here, Rahulji and Karad sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, Shri Asim Patilji. Thank you very much for your words of wisdom. And now it is indeed my honor and privilege to introduce you to the next guest of honor of this session, Shri Deepak Karandikarji. He has an experience in the CXO levels for last 4 decades. He started his career all the way back in 1980s with Tata Motors as the development engineer, leading then to Lead Impex as managing partner, Divyank Engineering as director, and then to Vishwadeep Presspass Private Limited as project associate, and then Praditi Presspass Private Limited as managing director and CEO. He is an active entrepreneur with a modest experience, as I said, of more than 40 years, and impetus to work for himself and the society, which keeps driving him to do better. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Shri Deepak Karandikarji. Yeah. Good afternoon, dignitaries on the dais, Honorable Anandiben Patil, Governor Uttar Pradesh, Professor Karad, Rahulji. At the outset, I would like to thank Professor Karad because he was my professor when I was in college, the College of Engineering, Pune. And I happened to meet him after a very long time and was taken aback by the way he brings himself at this age. Thank you, sir. Namaste. So I would take a couple of minutes to tell you about the organization that I am the head of. It is the Maratha Chamber. MCCI is one of the oldest chambers of commerce in the country and has been in service to the industry since 1934.
The Chamber has played a key role in the economic development of Maharashtra since its inception. MCCIA has been actively working with the central, state, and local government for attracting investments into Pune region and for promoting industrial development. The Chamber is also known for its dynamism in India and abroad. We have been actively promoting Pune region as an attractive destination for investments and a major global source of quality products as well as services. We have about 2,500 members from engineering, automotive, auto components, machine tools, information technology, environment technology, chemical and pharmaceuticals, agriculture to mention in particular, and food processing among others. Since the inception, we have an impressive track record of creating and bringing to Pune institutions important for business. We set up India's first auto cluster with funding support from Government of India, Maharashtra State Government, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation, and Food Testing Laboratory with funding from Ministry of Food Processing, UNIDO, SIDBI, and Industry at Pune. Most recently, the Chamber has set up a cluster for electronic sector, MECF, in Pune under the Government of India Brownfield Cluster Scheme. Our Chamber's most ambitious initiative so far is the SL Kirloskar International Convention Center, which is an important asset for Pune. The Chamber operates through its 18 committees, of which I am the head of each committee, but we operate through 18 committees and additional functional areas focused on improving the competitiveness of the industry and our region through a variety of initiatives. At MCCIA, we have given constructive inputs in formulating industrial, IT, and BT, foreign trade, agriculture and agro-industrial policies, special economic zone policies, electric vehicle of central and state governments, and many suggestions receive favorable consideration of the respective authority. We are one of the few chambers of commerce in India which have agriculture in their name, and we take it very seriously. We undertake focused initiatives. We are the first chamber in the country to set up an agri-export facilitation center a couple of years ago with the funding support from NABARD to guide the potential exporters about the procedures, quality norms, and regulatory requirements, among other aspects behind regular knowledge sharing sessions. We have more than 250 sessions at the MCCI per annum, and a large part of these are for agri and farmers. This has benefited hundreds of potential exporters too of agri-produce. The Chamber operates through its 18 committees and additional functional areas focused on improving the competitiveness of the industry in the region, a very important issue. Through a variety of initiatives such as specialized seminars, workshops, interactive sessions, hand-holding, and presentation by experts. The Chamber has been given constructive inputs in formulating industry, IT and BT, foreign trade, agri, and agro-industrial policies, special economic zone policies, electric vehicle and central and state government policies. Many of the suggestions receive favorable consideration of the respective authorities. We are thankful to them all over the place. Our chamber organizes interactive sessions with ministers, government officials, regulatory authorities in India on a regular basis. The chamber has a dedicated committee on higher education and skill development. The committee is working in close cooperation, leading academic institutions for the industry, institution interface and skill development through seminars and workshops, through hand-holding, as well as interactive sessions. We are engaged with the Maharashtra State Government's Commission on Science and Technology, as well as a few prominent research and development organizations in Pune to provide a platform for exchange of ideas about industry and R&D collaborative efforts. MCCI organizes capability building programs essential to management institutions like yours in several aspects important for smooth functioning of business operations.
These are meant for entrepreneurs and employees of our members and of the business community at large. These enhance the competence of the business community and supplement in efforts of enhancing their competitiveness. I feel that there is a need for the academic institutions to engage more actively with the industry, and more so with the MSMEs, a part which I represent so dearly. The MSMEs, as you know, contribute significantly to the GDP, exports, and employment in this country. The relationship of academic institutions, as may be MIT, with the industry should involve faculty members and students so that it becomes rewarding for both. Industry gets hands and brains to work on real-life problems, which could be beneficial for the students. Train the trainer is important, while they are undergoing a defined syllabus in the academic institutions. The flexibility at MIT in learning and development of students with active involvement of industry, offered by unique blend of coursework and internships in industry, is worth emulating in our institutions. Industry 4.0, AI, data analytics, precision electronics are buzzwords of today. Besides technology, finance, human relations, and regulatory compliances, sustainability, corporate social responsibility, Atmanirbharta, focus on indigenization are an integral part of business. It is important that students across the disciplines understand at least the basics of all these and other aspects of business operations. This way, they will become employable, and some of them could actually become entrepreneurs. I would urge all the faculty, student, and entrepreneurs assembled here to connect with MCCIA through calls, visits, website, and social media to understand what we can do together to further the cause of entrepreneurs, economic development, and prosperity for humanity. Thanking for listening to me. Thank you. Thank you very much, Shri Deepak Karandikarji. Thank you very much for your words of wisdom. And thank you very much for opening up the entire opportunities and sharing with the students all the possibilities. Thank you very much. And it is indeed my honor and privilege to request and invite the founder and chief patron of MITES MIT Pune and president of MIT World Peace University and the creator of World Peace Dome. Please put your hands together and welcome with a huge round of applause the UNESCO chair holder, revered Professor Dr. Vishwanath D. Karat, sir. Honorable Chief Guest of today's function, Her Excellency the Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel Bahenji, all other invited guests, Deepak Karandikar, Prashant Girbani, Ashim Patel, the Honorable Vice Chancellor, Ravi Chitnis, and Tapan Panda and others, and my student friends. It truly fills my heart with a pleasure and satisfaction when I see this very unique event. In that sense, a very historic event for MIT, of this opening ceremony of this unique building which has been built up in this campus, which has a long history. And friends, remember what a good fortune for all of you to bless this historic occasion. Our Honorable Governor, Her Excellency Anandiben Patel Bahenji, could find time with such a short notice. I was surprised that when the Honorable Governor has taken this decision to bless you all people with some hopes and expectations, possibly we are more eager to listen to her words of advice and wisdom.
when I use these words as a thinker, academician, philosopher, man of religion, man of philosophy, and the men and women who are the makers of the India, भारत की एक नई दिशा, and especially this very university which has been named as the MIT World Peace University. In the whole world, there are many a number of institutions which are peace institutions, but not the universities. Honorable Chief Guest and others, I would like to make a mention to you, friends, that the dream which we saw that time with Dr. Suresh Gaisas, Prakash Joshi, Mr. Awad is no more, but all the team which had started this very foundation of the institution, I have a hope and expectation that that time, Honorable Chief Guest, I would like to make a mention that we had taken a pledge and we had said that those boys and girls who feel discipline is a punishment, they did not apply to MIT. अर्जी मत करो जिनको शिस्त और चारित्र निर्माण की बात अच्छी नहीं लगती है. If you feel that this is a punishment for you, I still remember in 1983 when we were working only 5 rooms. शिवाजी मराठा स्कूल की 5 रूम्स थी और उसी 5 रूम में MIT शुरू हुई. पता नहीं ये जर्नी कैसा है. I am a believer on the words of wisdom spoken by the great noble son of India, your own brother, the great noble son Swami Vivekananda, who had professed एक भविष्यवाणी बोले थे 11 सितंबर 1893. ध्यान रखना, तुम्हारा एक भाई अमेरिका में शिकागो में बात कर रहा है उस टाइम, सैफरन कलर का रोब पहन के, द फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो, जहाँ पर उन्होंने कहा था, and he had been trying to advise and address the topmost thinkers, philosophers, scientists, men of religion, men of philosophy, gathered from the whole world. And he is addressing and he says very affirmatively to the world community to remember. Friends, you know it very well possibly before. You must have read his book also, Thus Spake Vivekananda, which became my life mission. This whatever you see, I don't want to claim and show to you some egoistic feeling behind. But there's a fact of life. This is the divine destinations, a divine message which receives, at least for my life, early morning and shows me the pathway. But Swami Vivekananda ने जो कहा, जो इसका अधिष्ठान है इस संस्था का, जब उन्होंने कहा, friends remember, union of science and religion / spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. सारी मनकाइंड की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं. अपने खुद के लिए नहीं, सारी मानव जाति के कल्याण की बात होती है. And he is giving the words of wisdom which have been given in the form of a mission and a profession. Remember, friends, I will tell you one more 2 sentences. In the year 1897, जरा याद करो वक्त क्या है. 1897 जब पूरा भारत देश was under the control of British and we were being ruled by those Britishers, and possibly before the Islamic rule came in for 700 long years. और उसके बाद में 150-200 साल ये जो रिजीम हुई, उस वक्त तुम्हारे भाई ने बोला है, 1893 की बात, पहले 1897 की बात है ये, जब उन्होंने भविष्यवाणी की है और दुनिया को बोलते हैं, सिर्फ तुमको और मुझे नहीं, सारे भारतवासियों को. And he says, friends, remember,
that after 50 years from today onwards, 1897, add 50, it comes to 1947. Exactly the day when we became free from the clutches of the British. और पहला स्वतंत्रता दिन माना गया. The then Prime Minister, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, who said to himself, he is the first servant of India and then the Prime Minister. और उसी लाइन में जब अभी तक ये मोदी साहब ने जो कॉरिडोर की बात हुई, ट्रांसफॉर्मिंग द पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ इंडिया इनटू डिवाइन नॉलेज सेंटर्स ऑफ इंडिया, इसके पीछे एक साइंस है भाई, क्योंकि मज़े की बात नहीं. और जो तुम्हारी संस्था ने तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे मदद से जो दुनिया का सबसे बड़ा डोम बना, वो अपना नहीं, वो इवॉल्व हुआ है. बट इट्स अ स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक प्रयोगशाला है वो. और इसलिए फिलोसोफर संत ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जर्नी है. वेरी ह्यूज टाइम एंड स्पेस का बात है ये साइंटिफिक है भाई. मैं हमारी ऑनरेबल गवर्नर बहन जी को बताने के लिए आपके सामने बोल रहा हूँ. मुझे दूसरा कुछ जीवन में आया नहीं, लेकिन यही बात हुई, यही रास्ता दिखाया, और उसका फलित है तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी बनना. और उसको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी स्कॉलर, थिंकर, फिलोसोफर, ऐसी एक अपनी बहन ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, बोलना उचित है कि नहीं पता नहीं, बट मैंने उनको अभी रिक्वेस्ट किया कि मुझे आज्ञा हुई है कि काशी बनारस जाने की, जहाँ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी साहब ने जो उज्जैन का कॉरिडोर बना, राम मंदिर बनाने की बात हुई, लेकिन काशी विश्वनाथ के ज्ञान के दालन में वहाँ तुम्हारी तरफ से वी आर ट्राइंग टू होल्ड द 9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी. ध्यान में रखो, दुनिया में साइंटिस्ट, मैन ऑफ रिलीजन, मैन ऑफ फिलोसॉफी एक मंच पे कभी आते नहीं. ये 1995 की बात है, पहली बार इसी संस्था ने ये किया. आज मैं आपको बताने में मुझे झिझक नहीं होती. आई एम होपिंग that this World Peace University, which is first of its kind, the time will come when the students of MIT Boston and almost the top universities of the whole world will come into this campus to learn and understand what is the Indian wisdom and Indian philosophy. Indian management model क्या है? We have a Japanese management model, American management model, the British management model. You have so many number of models of management education. बट एक ध्यान में रखना, समर्थ रामदास का दासबोध हो या मन के श्लोक हो, भगवत गीता का चिंतन हो या सारी ये संत ज्ञानेश्वर टू आइंस्टाइन का जर्नी हो, इन बातों पे थोड़ा जिक्र करने का प्रयास करो भाई. आई रियली कंग्रेचुलेट ऑल द टीम ऑफ राहुल एंड हिज ऑल एसोसिएट्स लाइक रवि चटनिस एंड तपन पंडा एंड ऑल अदर्स एंड ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, बिकॉज वी हैव प्लेज्ड that our institution should have the real promotion of these students to develop the winning personality. A winning personality, a physically fit, mentally alert, intellectually sharp and spiritually elevated. ये भारतीय संस्कृति का दर्शन है. इतना कह के फिर से मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आज के चीफ गेस्ट को, प्रणाम करके आई से थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. And it is now time when I'm going to invite and request the chief guest of this session, Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh. But before I invite her, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh. Over to you, team. Srimati Anandiben Patel was the 15th Chief Minister of the state of Gujarat. She is the Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh with the additional charge of the governorship of Madhya Pradesh. She was also Governor of the state of Chhattisgarh.
Previously, in the government of Gujarat, she has also been Cabinet Minister of Road and Building, Revenue, Urban Development and Urban Housing, Disaster Management and Capital Projects, as well as Cabinet Minister for Education. She has also been an MP in the Rajya Sabha from the state of Gujarat. She has been recognized as among the top 100 most influential people in India in the year 2014 by the Indian Express. Her entry into politics began with an accident during a school picnic in 1987 when she jumped in the Sardar Sarovar Reservoir to save two girls who were drowning during a school picnic, for which she received a President's Bravery Award. Impressed by her valor, the BJP leadership suggested to her to join the party, and in 1987 she joined BJP as the Gujarat Pradesh Mahila Morcha President. We are honoured to welcome the Honourable Governor of the state of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel. Let's welcome with a big round of applause, my friends, the Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh, the chief guest of this session, Srimati Anandiben Patel ji. MIT के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़ जी, संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राहुल कराड़ जी, संस्थान के सदस्य डॉक्टर मंगेश कराड़ जी, सदस्य प्रोफेसर प्रकाश बी जोशी जी, MIT के कुलपति डॉक्टर RM चिटनीस जी, प्रति कुलपति डॉक्टर मिलिंद पांडा जी, प्रति कुलपति डॉक्टर तपन पांडा जी, कुल सचिव प्रोफेसर गणेश वी पोकाले जी, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, युवा साथियों, देवियों और सज्जनों, मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे MIT WPU स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के साथ ही पूरे MIT परिवार और विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। डॉक्टर कराड़ जी दूरदर्शी एवं अथक प्रयासों से आज MIT विकसित और आगे बढ़ रहा है। ऐसे संस्थान अद्वितीय होते हैं जो विश्व शांति, आध्यात्मिकता और लोकतंत्र के लिए खड़े होते हैं। 2018 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के 13वें बैच के दीक्षांत समारोह में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। जब जब मैं इस संस्थान में आती हूँ तो मुझे यहाँ आध्यात्मिकता अनुभव होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल उपाधि प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। शिक्षा परिवर्तन के उत्प्रेरक शक्ति होती है और हमारे युवा सामाजिक परिवर्तन के सर्वाधिक शक्तिशाली कारक है। 125 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में है, उनमें से ही मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे। उनके ये शब्द आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन इस बार अकेले भारत ही नहीं है जो अपने युवाओं की ओर देख रहा है। पूरी दुनिया भारत के युवाओं की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है, क्योंकि हमारे युवा देश के विकास का इंजन है और भारत दुनिया के विकास का इंजन है। यह एक बड़े सम्मान की बात है। लेकिन विद्यार्थियों को परिपक्व बनाने का यह कार्य हमारे विश्वविद्यालयों को करना होगा, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय जैसे उच्च संस्थान उन कार्यशालाओं की तरह होते हैं जहाँ मेगा का विकास होता है। यहीं पर युवाओं को निखरने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा स्तर पर अनेक पाठ्यक्रमों में बदलाव करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को अनुभवजन्य, जिज्ञासा बढ़ाने, खोज परक, मनोरंजक और लचीला बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। अब विद्यार्थियों के सामर्थ्य, ज्ञान को आधार बनाकर उनको और ज़्यादा सीखने का मौका दिया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रमों को न सिर्फ नौकरी के साथ जोड़कर बनाया जा रहा है, बल्कि स्वावलंबन, योग और संस्कार युक्त शिक्षा देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल पर भी काम हुआ है। आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए आईआईटी और आईआईएम की भी स्थापना हो रही है। देश को सुपर पावर बनाने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था बहुत आवश्यक है। हमें काफ़ी बड़ी संख्या में दक्ष मानव संसाधन की ज़रूरत है। इसके लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में सख्त परिवहन भी आवश्यक है। हमें ज्ञान को दूसरों से लेना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज्ञानवान नागरिक तैयार करें। मुझे विश्वास है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित शिक्षा मॉडल, रिसर्च और वोकेशनल एजुकेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हमारे प्रबंध के विद्यार्थियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। आत्मनिर्भर भारत के मिशन में स्थानीय उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच एक सेतु का काम कर सकते हैं। आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चुनौतियां भी नहीं हैं। इन चुनौतियों को भी हमारे प्रबंध के छात्रों को समझना होगा। जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। वास्तव में जैसे जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। हम सभी ने देखा कि कोविड काल में टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की भावना से देश में काम हुआ। यह सब बेहतर मैनेजमेंट से ही संभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इसलिए हमें अपनी शिक्षण व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुसार तैयार करना होगा। देश के युवा हमारी शक्ति है। आज युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा से भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। मुझे प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से तैयार करने पर कार्य भी चल रहा है। हमारे शैक्षिक संस्थानों में पोटेंशियल है, बस ज़रूरत है उन्हें प्रोत्साहित करने की। हमें अपने विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय रैंकिंग सूची में शामिल करने के लिए ठोस प्रयास करना होगा, ताकि युवाओं का शैक्षिक पलायन रोका जा सके। मैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ ही राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हूँ। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं राज्य विश्वविद्यालयों में विश्व स्तरीय बनाने तथा नेक मूल्यांकन तैयार को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की है। नेक तैयारियों के लिए कार्यशालाएं कराई, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। आज प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आए हैं, एक विश्वविद्यालय A में है और बाकी अभी सबमिशन कर दिया है। और मैं जानती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वे विश्वविद्यालय भी A+ में आ ही जाएंगे। इसके साथ ही अनेक निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी नेक के लिए आगे आ रहे हैं। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी प्रकार के मानव संसाधनों की ज़रूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो उपलब्ध कराए। मित्रों, आज
मैं कल से पुणे में हूँ। आज सुबह में एक कार्यक्रम में मैं उपस्थित थी। गुजरात की एक संस्था ने एक क्राफ्ट का एक एग्जीबिशन लगाया है और सुबह में कई लोग पुणे के क्राफ्ट देखने के लिए, और जो आर्टिजन थे जो देश के 13-14 डिस्ट्रिक्ट में से 14 स्टेट में से आए थे, उनके साथ बातचीत करते थे। आर्टिजन ने अपनी अपनी बात भी वहाँ कही और आप सब लोगों को आश्चर्य होगा, और मैं तो पिछले 22 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। वे लोग अनपढ़ हैं, सब लोग कभी कोई स्कूल में नहीं गए हैं, फिर विश्वविद्यालय में तो कहाँ से अवसर मिलेगा उनको। और ऐसे लोग अपने घरों में बैठकर अपने तरीके से चीज़ें बनाते हैं, और अब उसका लक्ष्य ये है कि हम जो हमारे पिता हमारे दादा जो बनाते थे, आज हमारे बच्चे इसमें से पलायन हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारी ये जो यूनिक चीज़ है ये भारत में से लुप्त हो जाएगी। उसके बचाए रखना है, लुप्त नहीं होने देना है, और इसी वजह से ये सभी परिवार इसमें लगे हैं। मैंने आज वे लोगों को कहा मित्रों कि आप डिग्री धारक नहीं हो, लेकिन मैं आपको डिग्री धारक कहती हूँ। आपने पीएचडी इसमें कर ही लिया है मित्रों, क्योंकि अपनी प्रोडक्ट बनाना, नई डिज़ाइन करना, और आपको मतलब को पब्लिक को कैसी डिज़ाइन की चीज़ें चाहिए वो सोचना, और इसी हिसाब से अपनी चीज़ें बनाना, और कश्मीर से लेकर इधर आना, ये गौरव की बात है हम सब के लिए मित्रों। और इसमें सभी ज़्यादातर 80% महिलाएं हैं मित्रों। वे लोगों ने अपने अपनी बातें वहाँ बताई, मुझे बहुत ही खुशी हुई। एक एक महिलाओं ने कहा हमारे सामने कि हम 50 साल से करते थे, हम 100 साल से वो कर रहे हैं, और आज 100 लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं। किसी ने कहा हम 250 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, किसी ने कहा कि हम 1000 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ये हमारी ताकत है मित्रों। अनपढ़ परिवार, कच्छ की बॉर्डर पर बैठे हुए लोग, उत्तर प्रदेश के नेपाल की बॉर्डर पर बैठे हुए लोग, एक देश की ऐसी परंपरा को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए हमें गौरव होना चाहिए, और ये सब देखने के लिए जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए मित्रों। आप सबको मैं विनती करती हूँ मित्रों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमने हमारे जीवन में कितने लोगों को हाथ पकड़ा, कितने लोगों को आगे बढ़ाया, ये सोच लीजिए पहले, और उनके जीवन को देखिए। अनपढ़ लोग भी 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और हम रोजगार की ये गवर्नमेंट के सामने हाथ लंबा करते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा मित्रों। उस पढ़ाई किस लिए है? मेरे साथ कई चर्चाएं होती है, आज भी कई लोगों ने मेरे साथ चर्चा की है। पुणे यूनिवर्सिटी के कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के 8 से 10-12 कुलपति मुझे मिलने के लिए आए थे आज। वे लोगों ने भी मुझे बताया, और मैंने कहा कि आप देखिए मित्रों, आज जब मल्टीपल चॉइस के बारे में नई शिक्षा नीति में बातचीत हो रही है, तब एक शंका है सब लोगों में, क्या है हमारे अध्यापक ये स्वीकार करने के लिए तैयार है? आप फिजिक्स पढ़ाते हो, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड कोई नया सब्जेक्ट आया तो आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? ये चर्चा हो रही है मित्रों, ये चर्चा हो रही है। तब मैंने कहा कि देखिए भाई, भारत हमारा देश गरीब देश है, और जब गरीब देश है और इसमें हमें बच्चों को पढ़ाना है, और कई नए नए प्रकार के सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो क्या नए प्रोफेसर आपको दिया जाएगा? क्या गवर्नमेंट पर और बोझ आप डालना चाहते हो? हमें प्राइमरी शिक्षा देखना है,
सभी बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी देखना है। हमारे जो बच्चे, गरीब के बच्चे जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, उनको भी कुछ न कुछ सुविधा देनी है, और साथ में हायर एजुकेशन तक वे लोगों को भी पहुंचाना है। नए नए अवसर रोजगार के ढूंढना है, और जो हमारी ड्यूटी हम अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे तो ये हायर एजुकेशन और तो शिक्षा का मॉडल कैसा हो जाएगा। तो मैंने एक ही चीज बताई, मैंने यूपी में कंपलसरी किया है कि सबको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको रहना है, और ये सब कुछ काम आपको बैठकर करना है मित्रों। ये हमारी ड्यूटी है मित्रों। हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारी जनता जो है ये हमारे पास चाहती है कि हमें भी पढ़े, लेकिन जो हम ही नहीं पढ़ाएंगे, नए अवसर उसके सामने हम नहीं रखेंगे, नए सिलेबस नहीं बनाएंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, कोई रिसर्च नहीं करेंगे, जो कल्पना हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, वो कैसे सिद्ध हो सकता है मित्रों, कैसे सिद्ध हो सकता है। और इसी वजह से हम सबकी ये ड्यूटी है, चाहे मैं कुलावती हूँ, चाहे मैं कोई भी स्तर पर हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी मुझे ड्यूटी करनी ही है मित्रों। मैं कभी कभी बताती हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है मित्रों, क्या आप यूपी में बैठकर क्या कर रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटियों को, जो शासकीय यूनिवर्सिटी है मित्रों, सबकी परिस्थिति मैं जानती हूँ। एक एक यूनिवर्सिटी में 500-700 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। मैंने कहा कि आप एफिलेटेड कॉलेजों के साथ बैठिए, एक एक आंगनवाड़ी को सहाय करिए, एक एक आंगनवाड़ी गोद लीजिए। और आंगनवाड़ी में हमारे गरीब के बच्चे आते हैं, झूपड़पट्टी के बच्चे आते हैं, कई नदी के किनारे पर रहते हैं मित्रों, कोई फुटपाथ पर कैसे कैसे जगहों पर रहते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों को जब हम आंगनवाड़ी में लाते हैं तो उनकी भी अपेक्षा होती है कि मेरे बैठने के लिए चेयर चाहिए मित्रों, मुझे लिखने के लिए छोटा सा टेबल चाहिए, मुझे खाने के लिए एक अच्छी डिश चाहिए, मुझे खेलने के लिए टॉय चाहिए मित्रों, और अच्छा भोजन चाहिए। कौन करेगा सब कुछ? हमारा समाज देने के लिए तैयार है, हमारी सभी इंडस्ट्री देने के लिए तैयार है, सहाय करने के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या देना है, कैसे देना है, क्या ज़रूरत है। और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटी एक काम करना है। और आज मैं खुशी से आपके सामने बताना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल तो इसमें चला गया कोरोना में, लेकिन पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने 3000 आंगनवाड़ियों में, एक आंगनवाड़ी में 50,000 रुपया के साधन आंगनवाड़ी में पहुंचाया है मित्रों, उस आंगनवाड़ी में पहुंचाया। राज्य सरकार ने कोई खर्च नहीं किया है, सिर्फ न सिर्फ हमारी कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियां, वे लोगों ने ही बता दिया कि हम 10 आंगनवाड़ी को देंगे, हम 5 आंगनवाड़ी को देंगे। मैंने कहा देना पहुंचाना नहीं है, लेकिन स्वयं लेकर जाना है। आंगनवाड़ी में जाइए, आंगनवाड़ी तक पहुंचिए, वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठिए, बातचीत करिए, कहाँ से आते हैं, क्या करते हो, क्या खाते हो, कहाँ रहते हो। हमारे स्टूडेंट्स के साथ लेकर जाइए वहाँ। और आज ये सब वो काम कर रहे हैं मित्रों। क्या है इसमें? सरकार की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है कि समाज की कोई जिम्मेवारी है? और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, कहाँ है मित्रों, 2022-25 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। आप सब लोगों ने सुना होगा, सबने सुना है,
देश की 130 करोड़ की जनता ने सुना है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है। कैसे बनाओगे टीबी मुक्त? क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि हमारी आसपास कई टीबी वाले हैं मरीज, हमारे घर में मरीज है, हमारे घर में जो काम करने वाली कोई बाई आती है, कोई भाई आता है, इसके घर में भी टीबी वाला मरीज है, लेकिन हम कभी पूछते ही नहीं है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। अरे सरकार तो ढूंढेगी, टेस्ट करेगी, एक यादी बनाएगी, लेकिन लाखों ऐसे हमारे लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर 80 साल की माँ है, उसका जीवन सुधारना है मित्रों। मैंने मध्य प्रदेश में अभियान चलाया, यूपी में अभियान चला रहा है अभी, और आज तक पिछले 1.5 साल में 2 लाख परिवार के बच्चों को टीबी में से मुक्त करवाया है मित्रों। कैसे करवाया? इसमें राज्य सरकार की कोई सहाय नहीं ली है मित्रों। सिर्फ एनजीओ, कॉलेज के टीचर्स, यूनिवर्सिटी के अध्यापक, सबको प्रेरित किया, और राजभवन खुद, हम लोगों ने हर साल 25-30 बच्चों को भी गोद लिया है, और वे लोगों को हम कुछ खाना, मूंगफली, चने, गुड़, फ्रूट्स, सत्तू, ड्राई फ्रूट्स, चीकी, ये सब हम 15 दिन में एक बार वहाँ पहुँचाते हैं, स्वयं लेकर जाते हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ बातचीत करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। और 6-8 महीने में टीबी वाले बच्चे, टीबी वाले युवा, टीबी वाले महिलाएं सब टीबी में से निकल जाते हैं और खुद पढ़ाई में लगते हैं। महिला अपना जो काम करती थी, इसमें थोड़ा सा टीबी के कारण थोड़ी रुकावट आती है, लेकिन टीबी में से बाहर निकल जाती है तो फिर से अपना काम शुरू कर देती है मित्रों। ये काम हमारा है मित्रों। यूनिवर्सिटी को मैंने कहा है, यूनिवर्सिटी कैंपस में बाहर निकलिए और नजदीकी गांव में जाइए, देखिए गांव की स्थिति क्या है मित्रों। गांव में क्या कल्चर है, गांव में हमारी महिलाएं पुरुष क्या क्या नई नई चीजें बना रहे हैं, गांव के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, गांव में पानी मिलता है कि नहीं, गांव में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं, ये सब देखिए और दिलवाइए मित्रों। ये क्या हमारा काम नहीं है मित्रों? ये भी हमारा काम है। और इसी वजह से जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, ये सभी यूनिवर्सिटियों ने 5-5 गांव, कोई यूनिवर्सिटी ने 10 गांव, तो कोई यूनिवर्सिटी ने 50 गांव गोद लिया है, और वहाँ जाते हैं, अध्यापक भी जाती है, महिला अध्यापक भी जाती है, स्टूडेंट्स को लेकर जाती है, और वहाँ मैंने जो सूची बनाई है वो सूची के हिसाब से गांव में काम हो रहा है मित्रों। गांव में काम हो रहा है। और नेक एक्रेडिटेशन में हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको बनाया है कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक गांव लिया, एक गांव में सभी काम हम लोगों ने पूरा कर दिया, तो हमारे लिए तो बेस्ट प्रैक्टिसेस है मित्रों। और सोच लीजिए, ये भाव से जो हम काम करेंगे, एक यूपी का ही मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ कि वहाँ 50-60 यूनिवर्सिटियाँ हैं और 45,000 कॉलेजेस है। मैंने कहा कि एक कॉलेज एक गांव गोद ले लेता है और 5 साल एक गांव में बैठकर काम करता है, और वही यूनिवर्सिटी, वही कॉलेज में 5,000, 2,000, 3,000 बच्चे हैं, ये सब मिलकर एक गांव का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? मुझे बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है 5 साल में? सोचिए मित्रों। उस प्रधानमंत्री वही कहते हैं, भाई हमारी क्षमता है, लेकिन एक क्षमता अंदर है, हम अपने लिए काम करते हैं। मैंने बताया कि हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छा काम करते थे, मैंने तुरंत कहा वो अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं मित्रों। ये दूसरों के लिए नहीं करते।
यदि अपने लिए काम करो, साथ साथ में दूसरों के लिए भी काम करो, तो ही हमारी ये सही शिक्षा है। और मैं ये मानती हूँ कि ये सही शिक्षा है मित्रों। आप भारत सरकार या तो केंद्र सरकार में से या तो राज्य सरकार से आंकड़ा मंगवाइए मित्रों, आंकड़ा मंगवाइए क्या स्थिति है। आप देखिए जरा, आप पूरी भारत सरकार शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। मैंने यूनिवर्सिटी को कहा, क्या ये आपने सुना? यस सुना। क्या आपके दिल में कुछ टच हुआ? भारत सरकार कर रही है, हमारा दायित्व क्या है यूनिवर्सिटी का? 200 एकड़ का, 300 एकड़ का ये बड़ा कैंपस, क्या इसमें कोई तालाब बनाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है आपने? पानी का शुद्धिकरण का काम आपने शुरू किया है? क्या हम हमारी यूनिवर्सिटी को जितना पानी पीने के लिए चाहिए इतना पानी का स्टोरेज हम कर सकते हैं खुद हमारी यूनिवर्सिटी में? वही आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी बनेगी। हमें वहीं से पानी नहीं चाहिए, हम लोग बारिश का पानी आता है उसको शुद्ध बनाकर हमारी यूनिवर्सिटी को हम देंगे, वो ही आत्मनिर्भर हमारी यूनिवर्सिटी है मित्रों। एक एक चीज लीजिए मित्रों, एक एक चीज, एक एक चीज। एक बार मैं एक गार्डन में गई मित्रों, देखने के लिए गई थी। कई लोग काम करते थे अंदर, महिलाएं थी, पुरुष थे, सब लोग करते थे। इतना अच्छा गार्डन बनाया हुआ था। मैंने इसमें से कई महिलाएं ने मैंने बुलाया कि आओ इधर आओ। मेरे सामने आई, मैंने कहा, पूछा क्या आपको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिला है? आपकी बेटी कहाँ पढ़ती है, जाने के लिए साइकिल मिली है आपको? ऐसे कई प्रश्न पूछे वे लोगों को। तो किसी ने कहा मुझे मिला है, किसी ने कहा मुझे नहीं मिला है। दिव्यांग था तो मैंने कहा कि आपको कोई साइकिल मिली है? तो कहीं ना नहीं मिली है। तो मुझे विचार आया, फिर मैंने डीएम को लगाया, कलेक्टर को, कि ये पूरे गार्डन में जितने लोग काम कर रहे हैं इसका पूरा एक लिस्ट बनाइए और ये परिवार को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है और कौन सा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ये आप तय कर लीजिए। परिवार में कौन है, कहाँ पढ़ता है, कौन सी स्कूल में जाता है, कौन सी कक्षा में है, तो ये सब कुछ मेरे सामने लाइए। ये सब कुछ मेरे सामने आ गए। फिर मैंने कहा कि आपके जितने डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, ये सभी सरकारी डिपार्टमेंट राजभवन में आकर अपने अपना एक टेबल लगाए, अपना अपना टेबल लगाओ। और जो 700 लोग हैं वे लोग सुबह में आएंगे और जिसको जो नहीं मिला है वो ऑन द स्पॉट टेबल पर आज उसको दिलवाना है। 700 लोग आए मित्रों, मैं खुद उपस्थित थी इसमें मेडिकल कॉलेज वालों को बुलाया, आप सबका टेस्ट करिए भाई, डायबिटीज है, बीपी है, आंख में चश्मा है, ये सब करिए। और हमारी जितनी महिलाएं आई थी ये सबका सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट करिए। कोई महिला को कैंसर है कि नहीं है ये सब टेस्ट करिए आप लोग। तो एक और सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी को बुलाया था और गवर्नमेंट थी। 4 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चला और 1200 लोगों को उसका जो अधिकार था, उसको जो मिलना था, ये सब लोगों को 1200 लोगों को मिला मित्रों। क्या उनके लिए कौन काम करेगा मित्रों? वो तो सुबह शाम तक काम करते रहते। कोई सफाई का काम करता है, रोड साफ करता है, तो कोई गटर साफ करता है, ड्रेनेज साफ करता है। कब जाएगा? डीएम के ऑफिस में बाहर ताला लगाया हुआ है तो डॉक्टर बाहर एक खड़ा रहता है, किसको मिलना है? मतलब साहब तो काम में है। यही हमारी स्थिति है मित्रों। फिर मैंने काशी में करवाया, फिर मैंने कानपुर में करवाया कि करो ये सब काम मित्रों। तो गरीबों के लिए कौन काम करेगा मित्रों? और ये सब योजना है गरीबों के लिए है मित्रों, क्योंकि हमें गरीबों को ऊपर उठाना है।
उनको घर मिलना चाहिए, उसको गैस मिलना चाहिए, तो रोड मिलना चाहिए, उसको सफाई मिलनी चाहिए, उनकी दवाई सही ढंग से मिलनी चाहिए, उसके बच्चों की सारवार होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये तब होगा जब हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो एक उच्च वर्ग अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में रचा पचा रहता है और सरकार अपने काम में है, गरीबों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। मित्रों, बनाई गई योजना, बनाई गई गरीबों के लिए बनाई है, लेकिन गरीब तक, गरीब के घर तक योजना पहुंची? यदि नहीं पहुंची है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम कभी समय निकालकर गांव में जाए, सबके साथ बैठे, काम करिए और उसका जीवन उज्जवल बने, इसके लिए हम प्रयास करें। मित्रों, एजुकेशन का वही अर्थ मैं समझती हूँ, यूनिवर्सिटी का दायित्व वो है, ऐसा मैं समझती हूँ। आप समझते हो कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। हम 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 18 लेक्चर हो गया और हम चलते रहते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। मित्रों, कभी भी पढ़ाई का काम खत्म नहीं होता है। पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती ही रहती है, चलती ही रहती है मित्रों। और ये काम हमारे पूर्वज करते रहते थे, आज भी हमें ये करना है। और जब मैं MIT में आई हूँ और इतना सुंदर सब व्यवस्था है, तो हम भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, जो इच्छा है और वो जो दिशा दर्शन कर रहे हैं मित्रों, वो हम एक एक चीज़ पकड़े, एक एक चीज़ पकड़े कि हम टीबी में काम करेंगे, हम वैक्सीनेशन में काम करेंगे, हम सफाई का काम करेंगे, हम गांव में जाकर एक आंगनवाड़ी को गोद लेंगे, हम गांव में जाकर एक प्राइमरी स्कूल में बैठेंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे। ऐसे एक एक काम हम पकड़ कर करेंगे तो मैं मानती हूँ कि भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। मित्रों, बनेगा ही बनेगा। आप सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ। हमारी ये युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, मुझे बहुत ही खुशी है। आप सबको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Thank you very much. Let's give a big round of applause, my friends, to Honorable Governor of the state of Uttar Pradesh, Madam Anandiben Patel ji. Thank you very much for your words of wisdom. My friends, in our School of Business, we have been talking about entrepreneurship. We keep talking about different ways of connecting. May I request everyone to kindly accept the chairs. दोस्तों, 21 राज्यों में फैले 25,000 से भी ज्यादा कारागिरों को साथ लेके 14 NGOs के नेटवर्क के माध्यम से 70 से भी ज्यादा शिल्पकलाओं में काम कर रहे हैं। क्राफ्ट रूट्स वोकल टू लोकल दृष्टिकोण के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। और जैसा कि मैडम जी ने कहा, देश भर के कारागिरों को वैश्विक दर्शकों के सामने ले जाने के लिए क्राफ्ट रूट महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में एक कारागिर मेला आज से शुरू कर रहे हैं। ये हमारे पुणे के डच पैलेस, मतलब जो रेसिडेंसी क्लब के सामने हैं, वहाँ आप सभी लोग उसका आनंद उठा सकते हैं। आज मतलब 2 फरवरी से लेके 6 फरवरी तक सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप विजिट कर सकते हैं। हमारे देश के 21 राज्यों के 70 से भी ज़्यादा शिल्पकलाओं को और 100 से भी ज़्यादा कारागिरों को उन्होंने जो काम किया है वो पूरे विश्व के सामने ले जाने में आप सभी का योगदान चाहिए। Thank you very much, my dear student friends. I'm sure you all would participate actively in this activity. And with this, I would now like to request the Honorable Pro Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. Tapan Panda sir, to kindly propose vote of thanks. Thank you, Professor Bapat. There's a long list of people to thank, give vote of thanks. But one of the interesting things, we are searching for someone to really look up to. How do we really execute the rural immersion program, and what should be the scope of that work, which has been explained by our honorable guest today. So I take this opportunity to thank our chief guest, Governor of Uttar Pradesh, and also
if you remember the kind of work she has done in Gujarat, she has done great work in Gujarat. When she was talking about her work, and there is a video which was going there, I could remember how much of water has been brought to Gujarat during her time. Thank you, madam, not only showing your administrative skills, but your sensitive skills. In your speech, you have talked about 4 important things. Number 1 is self-discipline, how it is important in life to have self-discipline. Second part is a collaborative behavior as a student of management. How can you collaborate with each other? The third part is that you should have empathy. How should people build up empathy? I think professional education is fine, but there is also necessary to build empathy. And finally, to get into the 65% of India, or 75% of India, which is the rural India, where the real management skills are being tested for the people. Thank you, ma'am, for your kind presence. After serving 20-25 years in some of the excellent business schools, we always looked at professional excellence. But after I landed up here, I could sense out that our founder, Sri Vishwanath Karad, Dr. Vishwanath Karad, wanted socially sensible manager who are emotionally strong managers with professional skills and information technology capabilities, and also spiritually being elevated. That's a very complex job to lead this exercise. So now the scope of the work has increased, that we should go beyond our classrooms and go beyond to the world and learn from the world, bring it to the classroom. Thank you, sir, for the guidance that you have given to us. And last 6 months have been an ideation with Mr. Rahul Karad, the executive president. So we'll have some meaningful conversations. My job is to translate that into a strategy and document it and try to see how we can implement it. So in my first interactions, he said something called plus plus. Now I can realize, and all of us realize, how impactful is the plus plus part, because from our honorable chief guest speech, we could find out how much of that plus plus part we are doing to reach towards the people's street. So there are 2 activities, madam, we are trying to do. One is to create a network of 150 small and medium enterprises and work with them. Another one is to create a network of 100 NGOs and make our students to go and work with 100 NGOs there. We already have a rural immersion program where our students will go for rural immersion program. All these are being ideated by Sri Rahul Karad, sir. Thank you for this guidance. Other than this, we have our 3 eminent guests, and one of them is also alumni. I was happy to learn that he's alumni of our school. I would like to thank Sri Deepak Karandikarji, Sri Prashant Girvaneji, and Sri Asim Patilji for their kind presence and inspiring words. So when you're coming to the dais, he gave me an open blanket offer that I can go and interact with him and try to build up a relationship with our schools. So the building is not new. I just wanted to inform that we have created a new structure for our division, and this is the first event after restructuring our division with new leadership team. I would like to thank all my deans, faculty members who are present here, deans of other departments who are present here for their kind presence. Most of this work I have done in coordination with Sri Pavin Patilji, so thank you for your contribution to this exercise. There are many people who are involved into conceptualizing this event. That includes Mr. Mahesh Tharveji, and also there are other faculty members and non-faculty members who are involved here. I would like to thank all of them, those who are present here. But let's go back to the person who designed the building, conceptualized the building, and executed this building. I take this opportunity to thank Dr. Aditi Karad also, because most of the academic operations I have worked with her in executing these exercises. I like to thank her also for this work. So the architect, the construction people, those who are involved in designing this building, and the final designer who have worked on that. In this situation, today I would like to remember them and thank you. And more than that, thanks to all the students who are present here, all our students who are present here. Now I request all my students to rise, and let's clap for our guests and faculty members who have contributed. Thank you, ladies and gentlemen. I also thank our Vice Chancellor, sir, Dr. Ravi Chitnis, for his guidance, our registrar, who is present here, Dr. Ganesh, and Controller of Examinations, for their kind presence. Thank you, sir. Thank you very much. With this, we have come to the conclusion of this ceremony. We would be concluding with national anthem, so I request everyone to maintain the dignity of our anthem. Please maintain silence, everyone. I request everyone to please observe silence. I would like to share an important instruction with all of you. After the national anthem, all the students are requested to use the exit which is on my left-hand side. I repeat, all the students are requested to use the exit which is on my left-hand side, like this exit. The dignitaries and guests would be using this exit. So please make sure that you do not use the exit which is on my right-hand side. Also, you're requested to, once you exit from left-hand side, you're requested to assemble at the stairs of Swami
I would like to request Sant Gyaneshwara Hall staircase. You're requested to assemble there for a small photograph, and then you can proceed. I repeat, you're requested to assemble at the staircase right opposite to this pendal for a photograph, and then you may proceed. Thank you. I request my technical team to kindly relay the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you.